Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Iqbal Haider, working as a consultant cardiologist. Today we are going to discuss an important topic that is atrial fibrillation and its diagnosis and management. It is one of the most common arrhythmia which we encounter in our emergency. It is one of the commonest arrhythmia which we encounter in our emergency and OPD. This is a normal conduction system of the heart in which we see that randomly, and the P waves are replaced by the fibrillary waves, and these impulses are some are weak and some are strong. Therefore, there is a variable conduction through the AV node leading to the irregular rhythm. Incidence about in the world 50 million people are affected with the atrial fibrillation, and 30 to 40% lifetime risk in the white individuals. Atrial fibrillation is associated with the significant morbidity and the mortality, about 1.5 to 2-fold increased risk of the death, and 2.4-fold risk of the stroke, and there is a 5-fold risk of heart failure, and there is a significant risk of dementia, myocardial infarction, sudden cardiac death, CKD, and the peripheral artery disease. Risk factors of the atrial fibrillation: most common we have the cardiovascular risk factor, in which we have the advanced age, smoking, low physical activity, increased heart rate, obesity, increased height, and the hypertension and the diabetes. Patient with the cardiovascular disease are increased risk of the atrial fibrillation, in which the patient having the heart failure, coronary artery disease, atrial fibrillation, atrial inflammation, cardiac surgery, valvular heart disease, systemic arterial hypertension, and the structural heart disease. The non-cardiac condition which may leads to the atrial fibrillation, we have the CKD, obstructive sleep apnea, sepsis, pulmonary disease, and we have the metabolic disturbance, in which most important is the hyperthyroidism and the post-operative stage. Stages of the atrial fibrillation: first stage is the patient. These are the patient having the multiple risk factors of the atrial fibrillation that are the at risk, in which we discuss the obesity, smoking, and other things. Then we have the pre-atrial fibrillation. These are the patient having the structure or the electrical abnormality, in which the patient is having the atrial enlargement, frequent atrial ectopy, short burst of the atrial tachycardia, atrial flutter, and the other high atrial flutter risk scenario. Then we have the clinical atrial fibrillations. These are the patients who have developed the atrial fibrillations which are being diagnosed on the ECG. If it is less than 7 days, which is known as the paroxysmal atrial fibrillation. If it is more than 7 days, it is the persistent atrial fibrillation. If it is more than 12 months, we known as the long-standing atrial fibrillation. Permanent atrial fibrillation, we label patient with the permanent atrial fibrillation, in which we go for the no further attempts for the rhythm control, and we only go for the rate control in these patients. The mechanism, most common mechanism in all patients is having the systemic inflammation and the atrial hypertrophy, leading to the fibrosis and the patient develop atrial fibrillation. Sign and symptoms: as we know, that the patient most commonly presented with the heart palpitation, feeling of the butterflies, extreme fatigue, irregular heartbeat, dizziness and the lightheadedness, fainting, shortness of breath, and the angina. In the physical examination, in case of atrial fibrillation, we have the irregular pulse, and the cardiovascular examination, we have the variable intensity of the first head sound, and the rest of the examination depends upon the underlying condition, whether patient is having heart failure or the valvular heart disease. Diagnosis should be made by the visual interpretation of the ECG or the intracardiac signals. Intracardiac signals जिसे हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास इम्प्लांटेबल हमारे पास होते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह, लूप्ड रिकॉर्डर उसके अंदर, या फिर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर. The diagnosis of the atrial fibrillation should be made with the help of the ECG. Either we have a standard 12 leads ECG or the single lead ECG with more than 30 seconds showing no discrete P waves, and there is an irregular R to R interval. Management goals is very important. We have the 3 management goals in patient of the atrial fibrillation. First of all is the secondary prevention, in which we go for the control of the risk factors. Then we have the prevention of the thromboembolism. As we know that the atrial fibrillation is associated with the significant risk of the thromboembolic embolents. Most common we have the stroke. Then we have the control of the symptoms with the help of either we go for the rate control or the rhythm control. First we will discuss the secondary prevention. We know that the overweight is important risk factors of the atrial fibrillation. 10% weight loss reduces the atrial fibrillation symptoms. Exercise is important. That is more than 210 minutes per week reduces the AFib symptoms. Smoking should be quitted, and it result in the reduced
symptoms of the atrial fibrillation. Then we have the alcohol. It should be minimized or eliminate alcohol consumptions. Optimal control of the blood pressure and diabetes mellitus is important in the medical conditions. Then how can we prevent the thromboembolic events? We have the options of either we go for the anticoagulations. If the patient is contraindication to the anticoagulation, we have the other options of the percutaneous left atrial appendage device closure and the surgical left atrial appendage excisions. We go for the percutaneous device closure of the left atrial appendage is because most commonly the left atrial appendage is the site where the thrombus formation occurs. Which patient have we go for the thromboembolic? We go for the anticoagulations. Most we have the various scores. Most common score which we use in patient with the atrial fibrillation is the Chadwick scores, in which if the patient is having the congestive heart failure, we have the score of 1, hypertension score of 1, age more than 75 it's score 2, diabetes score 1, patient having history of stroke, TIA or venous thromboembolic events, we have the score of 2, vascular disease like myocardial infarctions, peripheral artery disease, aortic block, we have the score of 1, age more than 65 to 74, we have the score of 1, and the female sex usually have the score of 1. In case of male, if its score is more than 3, it is a class 1 indication for the anticoagulation, and in case of male it is more than 2, and in case of female it is more than 3, we have the class 1 recommendation for the anticoagulation. And the Chadwick score should be calculated annually in the patient with the atrial fibrillation if it is more than 2% per year. 2% means that the score is more than 2 in case of male and more than 3 in case of females. We have the anticoagulation, this is a class 1 recommendation. Among the anticoagulation, the direct acting oral anticoagulations are recommended over the warfarin, except in the case of the moderate to severe rheumatic mitral stenosis, and in case of the heart valve, in case of we have the mechanical heart valves. अगर पेशेंट्स का हो गया इंटरमीडिएट के अंदर 1 to 2%, that is the Chadwick score is in case of male is 1 and in case of female, then the anticoagulation is reasonable in this patient, and that is a class 2 indication. And if it is less than 1, there is no role of aspirin in prevention of the thromboembolic events. As we know that we are starting anticoagulations, we have to calculate the risk of the bleeding also, in which the most common score used is the Hess blood, in which we have the hypertension, that is uncontrolled hypertension more than 160, systolic blood pressure, that is score 1, abnormal liver and renal function, in which patient having the chronic liver disease, bilirubin more than 2 and the ALT more than 3 times of the upper limit. Renal functions के अंदर ये है कि patient with the CKD, patient on the dialysis, and the serum creatinine more than 200 micromole per liter, and 1 point for each abnormal liver and the renal functions. Patient with a stroke, 1 point. Patient having the history of a bleeding tendency, bleeding, severe thrombocytopenia, score 1. Labile INR, that is the total time in the therapeutic range is less than 60, it is 1. Elderly patient score 1, and patient with the alcohol score is 1. And the drugs which increase risk of the bleeding, in which we have the patient taking antiplatelets, patient on the steroids, patient taking the NSAIDs, we have the score of 1. If the patient is having a Hess blood score of 3 or the more than 3, then we have to reduce the dose of the anticoagulation. For example, if we are giving patient rivaroxaban 20 milligram, then if patient is having Hess blood score is more than 3, then we have to reduce the dose to 15 milligram OD. In case of LXPN, we have the dose of 5 milligram BD. We have to reduce the dose to 2.5 milligram BD. Dabigatran की जो dose है 150 milligram BD, we have to reduce the dose to 110 milligram BD. If the patient is having contraindication to the anticoagulation, we have the options, and patient is having high risk of the stroke, Chadwick score is more than 2, then we have the option of the left atrial appendage occlusion. These are the patient having the severe bleeding to the non-reversible cause, patient having spontaneous intracranial or intraspinal bleeding, and the patient having the serious bleeding related to the recurrent falls. If the patient is undergoing surgical procedure like wall replacement, and the patient is having high risk of the Chadwick score, high risk of score, and the patient is atrial fibrillation, then it is class 1 recommendation to go for the left atrial appendage excision. इसके अंदर ये सर्जरी के थ्रू इसको एक्सरसाइज किया जाता है. Now we are going to discuss the anticoagulation in the specific group, ACS or the PCI. PCI के अंदर पेशेंट्स के अंदर वी आर ऑलरेडी गिवन द डुअल एंटीप्लेटलेट्स, देयरफॉर देयर इज गिड रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग, देयरफॉर वी गो फॉर द डायरेक्ट oral anticoagulation or prefer over the vitamin K antagonist, that is warfarin. Or if the patient is undergoing PCI
and the patient is having atrial fibrillation, then these patient we are going to give the triple therapy, एंटीकोगुलेशन भी ले रहा है, डुअल एंटीप्लेटेड भी ले रहा है, तो इसके अंदर वी ट्राई टू गो फॉर द ट्रिपल थेरेपी फॉर 1 to 4 वीक्स के अंदर. इन पेशेंट्स के अंदर 1 to 4 वीक्स के अंदर हम ट्रिपल थेरेपी देंगे. 1 मंथ के बाद हम एस्पिरिन को होल्ड कर देंगे, ओरल एंटीकोगुलेशन और हमारे पास P2Y इनहिबिटर्स जो लोप्लेट है उसको 1 ईयर्स तक देंगे. 1 ईयर्स के बाद हम एंटीप्लेटेड को ऑफ कर देंगे एंड वी गो फॉर द सिंगल ओरल एंटीकोगुलेशन. तो 1 ईयर के बाद पेशेंट जो होगा उसको हम कहेंगे क्रोनिक डिजीज़, in which we go for the oral anticoagulation. Monotherapy is recommended over the combination therapy of the oral anticoagulation and the single antiplatelet therapy. Patient with the peripheral artery disease के अंदर we usually give antiplatelet therapy. If they develop the atrial fibrillation, then in these patients the monotherapy of the oral anticoagulation is reasonable over the dual therapy. CKD के अंदर patient, if the patient is having stage 4 or stage 5 disease, we give the normal dose of the oral anticoagulation. In case of stage 3 and 4, we reduce the dose of the oral anticoagulation. Rivaroxaban की dose भी reduce करेंगे, apixaban की dose भी reduce करेंगे. और in case of end stage renal disease, we have the option of warfarin की option है, और we can use apixaban in this patient. Valvular heart disease, as we already discussed, that if the patient is having the mitral stenosis or patient is having mechanical heart valves, we will go for the warfarin independent of the Chadwick scores. इसके अंदर Chadwick scores की ज़रूरत नहीं है. पेशेंट को अगर मॉडरेट टू सीवियर mitral stenosis साथ आ जाता है और पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, Chadwick स्कोर कैलकुलेट नहीं करेंगे और इसमें ड्यूरल एंटीकोगुलेशन का रोल नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें वारफिन शुरू करवाएंगे. और अगर पेशेंट को कोई और वेलुलर डिजीज़ है अदर देन द mitral stenosis और वैक्यूलर वाल्व, उसके अंदर हम डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेशंस यूज़ कर सकते हैं. In case of symptom controls, we have the 2 options, that is the rate control, rhythm control. Mortality का कोई फ़र्क नहीं है दोनों के ऊपर, they have the same mortality effect. अब किन patients के ऊपर we go for the rhythm control? These are the patients who are the younger, having the shorter history of the atrial fibrillation, patient having the more symptoms. ज़्यादा symptoms है, long history है, older patient we go for the rate control. Rhythm control के अंदर patient having difficult to control the heart rate, small size of the LA, more LV dysfunction and the more AV valve regurgitation, that is the mitral regurgitation or tricuspid regurgitation. In these patient we go for the rhythm control. बाकी जिसके अंदर easily heart rate control हो सकता है, large size of LA है, less LV dysfunction है, less AV valve regurgitation है, we go for the rate control. Rate control can be achieved with the help of the drugs or we go for the AV nodal ablation. Objective हमारा रेट कंट्रोल का हार्ट रेट को रिड्यूस किया जाए, लीनियंट कंट्रोल रखते हैं इसके अंदर 100 से लेकर 110 बीट्स पर मिनट, रिड्यूस सिम्टम्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ द टेकिकार्डिया, इंड्यूस माइक्रोपैथी. एज वी नो दैट कोई भी टेकिकार्डिया जो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट्स पे हो और फॉर द लॉन्ग टाइम दे लीड्स टू द टेकिकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, जिसमें एलवी फंक्शन रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस इनएप्रोप्रिएट शॉक्स इन पेशेंट विद द ICD, enhanced biventricular pacing and the reduced risk of the hospitalization. Rate control agents में हमारे पास beta blockers, we have the available digoxin. IV magnesium is given in case of acute setting. Then we have the amidrone and the calcium channel blockers, some doses इनकी. If the patient, ये हमारे पास emergency में patient present करता है with rapid ventricular rate, तो first हमने देखना है कि patient is hemodynamically stable और unstable. Sign of instability ये है कि patient hypotensive हो, shock के अंदर हो, patient acute pulmonary edema के साथ आ जाए और पेशेंट जो है उसके अंदर ACS के साथ हो, ऑनगोइंग इस्कीमिया हो, तो उसके अंदर डायरेक्ट हमने कार्डियोवर्जन करना है, DC कार्डियोवर्जन. वी गो फॉर द सिंक्रोनाइज DC कार्डियोवर्जन और इनिशियली जो हम रखते हैं 200 जूल्स की पर रखते हैं. अगर पेशेंट स्टेबल है तो हमने देखना है कि पेशेंट को अदर पेशेंट हैविंग साइंस ऑफ द हार्ट फेलियर और नॉट. अगर हार्ट फेलियर नहीं है तो वी कैन गिव बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन के हमारे पास डाइजोक्सिन है और उसके बाद 2B हमारे पास अमाइड्रोन है. अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है देन वी हैव टू गिव ओनली IV अमाइड्रोन. एक्यूट इवेंट से पेशेंट निकल चुका है, अब वी गो फॉर द लॉन्ग टर्म हार्ट रेट कंट्रोल. तो उसमें हमने देखना है इजेक्शन फ्रैक्शन, इफ इट इज़ लेस देन 40 तो हमारे पास ऑप्शन है ओनली बीटा ब्लॉकर्स की और सेकंड ऑप्शन इज़ द डाइजोक्सिन. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद द इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द लेस देन 40, और अगर मोर देन 40 वी कैन गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड आल्सो द बीटा ब्लॉकर्स. AV nodal ablation किन पेशेंट्स को देंगे? द पेशेंट हैविंग रिफ्रैक्टिव टू द रेट कंट्रोल मेडिसिन. अगर पेशेंट जो है रिफ्रैक्टिव टू रेट कंट्रोल मेडिसिन से उसके अंदर हम लोग AV नोडल की एब्लेशन करेंगे और 7 पेशेंट को पेस मेकर डालेंगे.
रिदम कंट्रोल में हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, वी हैव द फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन एंड द कैथेटर एंड द सर्जिकल एब्लेशन। रिदम कंट्रोल किन पेशेंट्स में किया जाएगा? पेशेंट हैविंग द रिसेंट एफ डायग्नोसिस दैट इज द लेस देन 1 ईयर्स, इट रिड्यूसेस द हॉस्पिटलाइजेशन, स्ट्रोक एंड द मोर्टिलिटी। पेशेंट विद द रिड्यूस्ड एलवी फंक्शन एंड द परसिस्टेंट एफिप। पेशेंट विद द हार्ट फेलियर के अंदर वी गो फॉर द रिदम कंट्रोल बिकॉज इट इम्प्रूव द सिम्टम्स एंड द आउटकम्स लाइक द हॉस्पिटलाइजेशन एंड द इस्कीमिया। पेशेंट विद द सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर, जो कि इनिशियली वी गो फॉर द हार्ट रेट के ऊपर, लेकिन हार्ट रेट कंट्रोल करने के बाद भी पेशेंट इफ इट सिम्टोमेटिक वी गो फॉर द रिदम कंट्रोल के लिए। सिमिलरली रिदम कंट्रोल में पेशेंट को देखा इफ हेमोडायनामिक स्टेबल है तो हम लोग वी कैन गिव फॉर द फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन और इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, दोनों कर सकते हैं। और अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो वी गो फॉर द ओनली इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। अब लॉन्ग टर्म जो हमने मेंटेनेंस ऑफ साइनस रिदम के लिए जो हम लोग एंटी एरिथमिक यूज़ करेंगे, उसके अंदर इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग द नॉर्मल एलवी, देयर इज़ नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास फ्लेकेनाइड वी कैन यूज़ और द प्रोपोफिनोन एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ द अमाइड्रोन। और इफ द पेशेंट इज़ हैविंग द स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज वी हैव द ओनली ऑप्शन ऑफ द अमाइड्रोन इन दिस पेशेंट्स। तो मोस्ट कॉमनली वी ऑल पेशेंट, हमारे पास फ्लेकेनाइड अवेलेबल नहीं है, वी गो फॉर द अमाइड्रोन इन ऑल पेशेंट्स। AF ablations इज़ डन फॉर द रिदम कंट्रोल के लिए किया जाता है। द पेशेंट हु आर रिफ्रैक्टरी टू द मेडिसिन, जिसमें हम लोग ऑलरेडी हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स देख सकते हैं, या फिर पेशेंट जो है यंग पेशेंट है एथलीट्स के अंदर, वी गो फॉर द एब्लेशन। परक्यूटेनियस एब्लेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पल्मोनरी वेन्स के लिए। और आफ्टर द एब्लेशन द एंटीकोगुलेशन मस्ट बी गिवन फॉर द 2 to 3 months। उसके बाद जो एंटीकोगुलेशन है विच डिपेंड्स अपॉन द चैडबर्ग स्कोर के ऊपर। इन पेशेंट विद द हार्ट फेलियर, if the patient is having the acute heart failure we go for the cardioversion। rate control we already discussed, EF less than 40 के अंदर हमारे पास बीटा ब्लॉकर, more than 40 के ऊपर we have the calcium channel blockers and the beta blockers and the digoxins। और पेशेंट विद द हार्ट फेलियर बिकॉज दे हैव द इंक्रीज रिस्क ऑफ द सिम्टम्स इसमें ज़्यादा होते हैं, तो वी गो फॉर द कैथेटर एब्लेशंस। तो किन पेशेंट्स के अंदर कैथेटर एब्लेशन का फ़ायदा हो सकता है? दीज आर द पेशेंट हैविंग द cardiomyopathy suspected because of the AFib, early onset of the heart failure, there is no significant ventricle scar, mild or we have the no atrial fibrosis, paroxysmal and the early persistent AFib in the younger patient, and it should be discussed with the patients। बाकी इसमें कोई इतना डिस्कस। एथलीट्स के अंदर क्योंकि ड्रग्स के साथ वी नो दैट इट्स हैविंग साइड इफ़ेक्ट्स, देयरफॉर इस पेशेंट्स के अंदर वी गो फॉर द कैथेटर एब्लेशंस। इसी तरह यंग पेशेंट के अंदर भी हम कैथेटर एब्लेशन इज़ द क्लास 1 रिकमेंडेशन। अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमनली वी सी द पेशेंट विद द हाइपरथायरॉयडिज्म एट्रियल फिब्रिलेशन, इसके अंदर एंटीकोगुलेशन देंगे जब तक पेशेंट यूथायराइड नहीं होता, और एक दफ़ा साइनस रिदम मेंटेन हो जाए उसके बाद एंटीकोगुलेशन की फर्दर ज़रूरत नहीं इस पेशेंट्स के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, वी हैव द क्लास 1 रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्ट रेड कार्डियोवर्जन विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, 200 joules के ऊपर सिंक्रोनाइज। इफ़ द पेशेंट इज हैविंग नो स्ट्रक्चरल डिजीज वी कैन गिव फ्लेकेनाइड, सोटोलोल। और अगर वी गो फॉर द रेट कंट्रोल वी हैव द ऑप्शंस ऑफ द बीटा ब्लॉकर इन विच प्रोपिनोल, मीटरप्रोलन एंड डाइजोक्सिन। अगर पेशेंट को इंक्रीज ऑफ स्ट्रोक होगा, देयर इज द नो एंटीकोगुलेशन विच इज सेफ टू द बोथ मदर एंड द फीटस, एंड मोस्ट कॉमनली वी यूज इन दिस पेशेंट इज द क्लेक्सेन, enoxaparin। So in the short, the atrial fibrillation is associated with the significant mortality and the morbidity, and the diagnosis is made by the ECG, and its management includes the control of the risk factors, prevention of the thromboembolic events, and the symptom controls. Thank you.